Hi guys, welcome back to the channel. So we have completed the pre-malignant and malignant lesion of skin, and we'll be starting with a new topic, that is immune based diseases. So immune based diseases में will be dealing first of all the types of hypersensitivity reaction, and then we'll jump into another topics. Okay, other immune based diseases. So let's start today's class. इम्यून बेस्ड डिजीजेस, हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस. तो सबसे पहले टाइप वन इज ऑल्सो नोन एज इमीडिएट और एनाफिलेक्टिक हाइपरसेंसिटिविटी, and it is mediated by IgE antibodies bound to mast cells and basophils. Okay, one more thing, I'll be discussing firstly only about the hypersensitivity reaction कि उसमें होता क्या है, and the treatment and other things I'll be discussing afterwards. First we'll be discussing all the type of hypersensitivity reactions. Okay, so जो first type होता है उसको हम लोग immediate या anaphylactic hypersensitivity बोलते हैं, क्योंकि it causes anaphylaxis and it is mediated by IgE antibodies which are bound to mast cells and basophils. So what happens in this reaction? When the allergen reacts with them, mediators which are preformed and stored within the cell's granule are released. तो जो mediators already बने हुए हैं and they are stored in the granules, they released, and this is known as degranulation. The reaction is immediate and the clinical effect is usually severe, and it is dependent on the site of exposure to the antigen. तो रिएक्शन तो इमीडिएट होता ही है, इसलिए इसको इमीडिएट रिएक्शन भी बोलते हैं. दूसरा, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द साइट ऑफ एक्सपोजर टू द एंटीजन. एंटीजन का एक्सपोजर किस साइट पे हुआ है उसके ऊपर भी डिपेंडेंट होता है. Now, the most significant inflammatory mediator is histamine. It causes smooth muscle contraction and vascular permeability, and this in turn produces vasoconstriction and edema. तो जो हिस्टामिन रिलीज होता है वो क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन करता है इन जनरल. स्मूथ मसल का भी कॉन्ट्रैक्शन करेगा और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन भी करेगा, एंड एक और चीज़ करता है क्या? वो वस्क्यूलर परमेबिलिटी इंक्रीज कर देता है. इन एडिशन हेपारिन, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स एंड न्यूट्रोफिल्स एंड इओसिनोफिलिक कीमोटैक्टिक फैक्टर्स आर ऑल्सो लिबरेटेड, और ये सारी चीज़ भी लिबरेट होती हैं. मास्ट सेल्स ऑल्सो इनिशिएट फॉर्मेशन. ये सब रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स द हाइपरसेंसिटिव, टुवर्ड्स द एलर्जन. ये सारे जो हैं वो रिस्पॉन्स है हमारे बॉडी के टुवर्ड्स द एलर्जन. सो मास्ट सेल क्या करता है? मास्ट सेल ऑल्सो इनिशिएट फॉर्मेशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स सच एज प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोटेरिन्स. दो इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स और रिलीज कर देता है, दैट इज प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड ल्यूकोटेरिन्स. These contribute to the reaction that develop several hours after exposure. और ये एक्सपोजर के कुछ ही घंटों में ये रिएक्शन स्टार्ट कर देता है, इसलिए ये इमीडिएट हो गया. Therefore, hypotension and even cardiovascular और respiratory arrest may occur. तो इस वजह से हाइपोटेंशन भी हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर अरेस्ट और रेस्पिरेटरी अरेस्ट भी हो सकता है. हाँ, आई टेल वन थिंग, जो एनाफिलेक्सिस होता है, एनाफिलेक्टिक शॉक या एनाफिलेक्सिस जो होता है, इट इज़ अ वेरी सीवियर कंडीशन. सो उसका जो ड्रग है या लाइफ सेविंग ड्रग जिसको बोलते हैं, दैट इज़ एड्रेनलिन. इतना आई टेल यू, दैट इज़ एड्रेनलिन. तो एड्रेनलिन इज़ यूज इन एनाफिलेक्सिस. ओके, और एक और चीज़ होता है, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज एंजियोन्यूरोटिक इडिमा. इट इज़ नॉट एज सीवियर एज एनाफिलेक्सिस, बट इट अकर्स एंड इट कॉजेज, firstly, it is a type 1 hypersensitivity reaction where IgE antibodies became bound to mast cells, same thing, and cause a release of vasoactive mediator, which in turn cause capillary leakage, resulting in clinical edema. So it causes clinical edema. Okay,
That's all about today's class. We'll be continuing this in next class. Till then, like, share, subscribe, and comment. Bye.